Hi Ajay, welcome to my show, my new show, revisiting a classic. With so this time you are coming on my podcast. So first of all, for the audience, first of all, please subscribe to my channel. Show us some love. And Ajay Govind is the director, writer, and of this small film, small but beautiful film called Madappally United, which is also a children's film. And tonight we are discussing a children's film, another children's film, which is called The Mirror, which is not directed by Andrei Tarkovsky but is directed by Jafar Panahi. आई नो, क्योंकि बहुत लोग ने मुझे बोला है कि कौन सा द मिरर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आंधी तारकोफ्स्की वाला नहीं, मैं बोला नहीं, जाफर पनाही का द मिरर। अच्छा, ओके, वैसे लाइक लोगों लाइक वो गलत फहमी में लोग रह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। सो सो अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये फिल्म के बारे में पहली बार कैसे कभी सुना था, और जब सुना और देखा तो आपको कैसा लगा, और कंपेयर टू अभी आपने रीवॉच किया जस्ट ये डिस्कस करने के लिए, सो आपको कैसा लगा था? जस्ट टेल मी ऑल अबाउट इट। Sure. Thanks so much for having me on the show, Sanket. It's really nice to be speaking about the mirror, especially on Children's Day, and especially in the context of having made a children's film myself. I think it's a very special thing. Now, as far as the mirror is concerned, to be very honest, मुझे specifically याद नहीं है मैंने पहली बार कब देखा था, but definitely I think it was in the early 2000s. I remember I had, and I'm sure I still have, the DVD of the film, and I think it was definitely, I think sometime before I became a filmmaker myself, before I started making films, and around the time that I had started to collect film experiences from the world, from watching a lot of world cinema, and उसमें उस पूरे प्रोसेस में मेरे लिए ईरानियन सिनेमा एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, इन द सेंस कि मेरे लिए हमेशा से जब से मतलब आई थिंक जो मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट ईरानियन फिल्म जो शायद मैंने देखी थी वो टेस्ट ऑफ चेरी थी, और अब्बास कियारोस्तामी की, राइट? कियारोस्तामी की। एंड सो वहाँ से लेके मैंने एक जो एक्सप्लोर किया था, आई थिंक बरान देखी थी as part of some workshop somewhere, and a bunch of these films, and especially then, of course, I discovered a lot of Jafar Panahi's work, and I was completely blown away. And matlab, kabhi when I look back at it, I'm surprised at how much time it took me to make a children's film myself, considering how much these films had influenced me. Because ये film और ये जो cinema है, and what it does, I think it was an experience that I really enjoyed, and I definitely felt very excited to bring it to screen also, you know. And of course within that spectrum also, जो children's film की हम बात करते हैं, और children's film अपने आप में बड़ा confusing चीज हो जाता है, मतलब is it really a children's film, is it a film that, is this a film that you can show to children, will they enjoy it, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बट ये जो कैटेगरी है चिल्ड्रंस फिल्म का या ईरानियन सिनेमा का, स्पेशली चिल्ड्रंस सिनेमा में, द मिरर रियली स्टैंड्स आउट, एंड आई गेस वील talk about that as we progress. You tell me your impressions. मैंने एक्चुअली ये फिल्म आपके कहने पे ही देखी थी, सच बात बताओ, आपके ही कहने पे देखी थी, कि बोला कि चलो जाफर पनाही की थोड़ी फिल्म्स हैं, मैं लाइक आपने बोला थोड़ी फिल्म से थोड़े नाम दिए थे, और आई थिंक द रेड बलून, वाइट बलून शायद से उनकी फिल्म थी, वाइट बलून या उनकी, और एक फिल्म थी, तो उनका नाम भी आपने सजेस्ट किया था। मैं सोचा कि चलो मिरर देख लेते, लाइक लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। देन आई वॉच दिस फिल्म। एक्चुअली द फर्स्ट रिएक्शन वाज आई वाज ब्लोन अवे। क्यों? क्योंकि मतलब जब भी वो कैरेक्टर, वो मीना जो कैरेक्टर, स्मॉल एक्ट्रेस, शी इज एक्चुअली फैबुलस बाय द वे, वो जब कैमरा में देखती है और एक वाइट शॉट में जस्ट एक से लाइक वो फिल्म में लाइक आई थिंक बीटीएस जैसा लगने लगता है, दैट एक्चुअली ब्लू मी अवे एक्चुअली, कि ऐसा कैसे हो सकता है एक फीचर फिल्म में, कि जब एक मतलब ऐसे ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल वो हो रहा है, और फिर जाके जस्ट हमें बीटीएस शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, और एक्चुअली इट्स एक्चुअली अ फिल्म। तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार क्या हो रहा है, और फिर जाके
आगे आगे जाके डायरेक्टर जाफर पनाही भी उस फिल्म में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनका उनकी जो मॉम है वो इन्वॉल्व हो रही है और ऐसे हो रही है। आई मीन क्या क्या जस्ट सिनेमास की हर रूल्स को लाइक तोड़ के समथिंग ही क्रिएटेड समथिंग वेरी न्यू, एंड दैट आई लाइक्ड इट वेरी मच, एंड दैट्स द पावर ऑफ जाफर पनाही आई थिंक, क्योंकि मैंने उनकी बहुत ज्यादा फिल्म्स नहीं देखी है। I would admit it, I haven't watched any of the film except this one. So let's just say this film hopefully makes me like एक गेटवे जैसा बन जाए कि like the mirror should be a gateway for me to watch his other films as well. And फिर जाके मैंने बहुत सारे थोड़ा रीडिंग किया, लाइक आई थिंक मैंने आपको एक आर्टिकल भी शेयर किया था, सो जस्ट अबाउट कि हाउ ईरानियन सिनेमा और लाइक एंड इवन जाफर पनाही के वर्क्स भी कैसे पॉलिटिकल होते हैं। नॉट जस्ट इट्स अ फिल्म अबाउट चिल्ड्रन, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द सिचुएशन इन पोस्ट रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन ईरान। सो वो एक एक्साइटिंग बात लगती है, नॉट जस्ट जाफर पनाही के फिल्म्स को देखने के लिए, लेकिन ईरानियन सिनेमा में और डायरेक्टर्स हैं, लाइक आई थिंक अब्बास कियारोस्तामी के फिल्म्स है, वो उनको भी देखने के लिए लाइक और एक्साइटेड होता हूँ। जैसे कि मैंने ये देखा, टेस्ट ऑफ चेरी देखा था। इट मैंने मुझे इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर जाके मैंने थोड़े आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश की थी, तो फिर जाके पता चला कि लाइक इट्स अबाउट द गाय, द लीड कैरेक्टर, ही इज रिप्रेजेंटिंग ईरान आफ्टर द पोस्ट रेवोल्यूशन। सो उनकी कहानी, और लाइक वो कैसे इतने सिंपल टॉपिक्स को जस्ट पॉलिटिसाइज, लाइक एकदम हिडन सिंबोलिज्म में पॉलिटिकल अपना जो आवाज है वो डालने की, लाइक दे आर जस्ट फैबुलस, वैसा लगा था। सो आप आपकी एक्चुअली व्यूज जानना चाहता हूँ कि लाइक इट लाइक आपके आपने भी एक जैसे अभी मैंने मेंशन किया था जस्ट स्टार्टिंग में ही कि लाइक यू आर द डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ मडपल्ली यूनाइटेड। हाउ डिड दिस फिल्म इंस्पायर यू, just in terms of everything, in terms of writing or in terms of how to handle like how to just be with children actually, क्योंकि obviously grown ups we can understand, but children actually it's a great task actually। आपने कैसे किया और like how this film was the inspiration? So I think मतलब मैं directly जहाँ तक inspiration की बात आती है, I think for me the mirror is probably in a way less of an inspiration for Madappally than some other films that I watched. For example, Hmm. Children of Heaven, or a few films of somebody like Mohsen Makmalbaf or Samira Makmalbaf and so on. मगर मेरे लिए आई थिंक एक डेफिनेटली एक जो एंड ये ईरानियन सिनेमा के बारे में हमेशा बोला जाता है इज द रियलनेस ऑफ द रियलिज्म, राइट? एक रियलिज्म होता है और उस रियलिज्म में कितना ज्यादा आप एक एक इम्प्रेशन ऑफ रियलिटी क्रिएट कर पाते हो, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक घर के अंदर बैठे हैं और एक कैमरा यहाँ प्लेस कर दिया जाता है, क्या सिर्फ इतना करने से कुछ सिनेमैटिक क्रिएट किया जा सकता है? इसका जवाब आई थिंक ईरानियन सिनेमा में है। फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ चेरी की आप बात कर रहे हैं, पैसेंजर सीट पे बैठा एक बंदा कैमरा पकड़ रहा है और एक बंदा ड्राइवर की सीट पे गाड़ी चला रहा है, एंड आपने सिनेमा बना लिया ऐसे, यू नो या व्हेन यू कम टू द मिरर, आई थिंक just reality as it unfolds, you know can be so cinema, I think। तो उस हिसाब से I think for me definitely Mirror and all these films that I've watched to be able to capture the realism, मतलब जितना रियल रख सकते हैं उतना रियल रखने की कोशिश या करने का एक मोटिवेशन डेफिनेटली था। Of course the film that I was making was very structured and very different, बट एट द सेम टाइम उसमें बच्चों के परफॉर्मेंसेस और उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से बच्चों के पर्सपेक्टिव से चीजें देखना और उसमें ज्यादा छेड़छाड़ ना करना, यू नो एज मच एज पॉसिबल। वो जो एक इनोसेंस है, वो जो एक प्योरिटी है जिसे हम कहते हैं कि the way that a child can, and that's the beauty of this film also, right? कि midway point पे around 40 minutes into the film the child suddenly just breaks the film and says कि नहीं ये तो मेरे को नहीं करना है, I don't want to do this, and children are capable of doing such things, of really kind of questioning, of really challenging in a way only children can, adults can't,
हम कई बार जो सवाल पूछते हैं उसको बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कई चीजें जो हम कहते हैं वी रियली पैडेड अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स ताकि ये ना लगे, वो ना लगे, ये पॉलिटिकल हो, बट चाइल्ड कैन जस्ट से नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, लाइक स्टॉप इट, आई डोंट वांट टू मेक दिस फिल्म, and then take off her, and such a political act, you know, of changing costumes, simply, at the face of it is just changing costume, but it's such a, and especially aaj ke context mein agar dekho, today's context of Iran, it's such a political act for her to do, and she does it with such simplicity, and only a child, I mean, I think wahi cheez agar ek adult ne kiya hota, if there was a teenager or a grown up girl sitting there and did the same thing, I think the impact would not have been the same, you know. Um, so I think the beauty of allowing reality to unfold, of not tampering with it too much, of letting it be. I think that is definitely something that I learned and I observed, and definitely subconsciously and in fact consciously. In my film, there is one particular shot, um, where the one of the girls, Sitara, played by Priyadatta, she's blowing bubbles in the air while she's washing clothes. और वो shot और उस shot का underlying music was a tribute to Children of Heaven. Was a tribute shot to Children of Heaven. When it was written like that, it was shot like that, and it was produced. It was packaged like that. So I mean, from subconsciously getting a lot of tributes and a lot of things, there was also very conscious kind of placement of Iranian cinema within my film. Yeah. हाँ, अच्छा। सो एक्चुअली ईरानी सिनेमा की आप बहुत बात कर रहे हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। सो और किसी और कौन-से फ़िल्म जैसे आपने अभी जस्ट चिल्ड्रन ऑफ हेवन जैसे एक नाम दिया था, व्हिच इज़ आई थिंक रिटन एंड डायरेक्टेड बाय, आई जस्ट फॉरगॉट द डायरेक्टर्स नेम, जिन्होंने अभी एक हिंदी फ़िल्म भी बनाई थी, Majid Majidi. Majid, yeah, sorry. That's right. Yeah. So, like, what all films did inspire you to just make a film about children, Yeah, except so for The Mirror and Children of Women? So the Mirror, there is another beautiful film called The Day I Became a Woman, which has three different stories. The first story is that of a child. There is a film called I don't remember the exact name. I think it's The Day Buddha Collapsed Out of Shame. Okay. I think it's one of the Malbuffs who's made it, and there's definitely like Taste of Cherry, Close Up. Very recently, I discovered or rediscovered. I watched it few times. This film called Where Is the Friend's Home? Again, a Oh, stunningly beautiful Kiarostami film, and so simple, so powerful. Matlab, these are the kinds of films that you wonder ki, matlab, how do, I mean, it just really, I think, reinforces the power of cinema, hmm, and that's what I love about The Mirror, especially. मतलब अगर हम मिरर की बात करें, आज इनफैक्ट मैं एक इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया था, there's a Malayalam writer director whose film has just released and is playing in the theaters, and he put out some disclaimer. I haven't watched his film, but he had put out a disclaimer saying कि first half of the film I think aspect ratio अलग है, और अगर आप टाइम पे अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों है, लेकिन अगर आप 10 मिनट लेट जाओगे फिल्म में तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कुछ गलती है, टेक्निकल गलती है, बिकॉज एस्पेक्ट रेशियो अलग है ना, hmm, you're hmm, not used to seeing it. So when I watched that, I was reminded of the fact that unfortunately people don't understand the importance of watching a film from point zero, because filmmaker क्या कहना चाहता है फिल्म में या कहानी में, वो बहुत शुरू से आपको बताने लग जाता है. लाइक द मिरर का पहला ओपनिंग क्रेडिट्स जो है करीब 1-1.5 मिनट है शायद, मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट ऑफ साउंडस्केप है बस. hmm, इट्स जस्ट द एम्बिएंट नॉइज, है ना. देन देयर इज एम्बिएंट नॉइज एंड देयर इज द साउंड ऑफ अ बेल, और वो बेल इस चीज का हमें नहीं पता. द टाइटल इज द मिरर, तो क्या कोई थिएटर का बेल है, ये फर्स्ट बेल है, सेकंड बेल है, थर्ड बेल है, नहीं पता. एंड देन इट ओपन्स एंड यू रियलाइज वी आर आउटसाइड अ स्कूल एंड द स्टोरी hmm, अनफोल्ड्स फ्रॉम देयर. बट वो 1-1.5 मिनट जब आप सिर्फ साउंड सुन रहे हो, यू आर एक्चुअली गेटिंग एन इंसाइट इनटू द काइंड ऑफ फिल्म यू गोइंग टू वॉच लेटर. क्योंकि काफी टाइम बाद फिल्म जब 40-50 मिनट कवर हो जाती है, एंड आफ्टर मीना रिफ्यूजेस टू बी इन द फिल्म, व्हाट यू सी इज साउंड्स, व्हाट यू हियर इज साउंड्स, यू डोंट सी मीना. hmm, मीना किसी और गाड़ी में बैठी है, कैमरा किसी और गाड़ी में बैठा है. hmm, So cinema or filmmakers
give you a clue as to what to expect right at the start. Serious filmmakers or serious cinema at least does it makes a conscious effort. Not to say that commercial cinema, I'm not making a distinction. I'm making a distinction between a story. मतलब एक फिल्म का टाइटल जो आता है ना, दीवार ऐसे क्यों लिखा हुआ आता है, राइट? या डॉन क्यों लिखा हुआ आता है, जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है डॉन क्यों लिखा हुआ आता है? बिकॉज इट सेज समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द फिल्म ना. तो उसी तरह से फिल्म का टाइटल आता है और टाइटल में आप देख रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, नाम तो पढ़ रहे हो, बट बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है, म्यूजिक नहीं है, देयर इज नो सॉन्ग, बट इट्स फोली इट्स साउंड्स चल रहा है. एम्बिएंट नॉइज. अब वो एम्बिएंट नॉइज से जब हम विजुअल पे आते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हम अब फिल्म में भी थोड़ी देर एम्बिएंट नॉइज ही देख रहे हैं, हमने कैरेक्टर नहीं पकड़ा अभी तक, कोई हीरो हीरोइन कुछ नहीं आया अभी तक, है ना? And then when Meena appears and then you start following her, ambient noise is a part of the film. Because eventually, the only thing the audience has in the mirror is sound. Visual chala jata hai, right? Now, for those, this is we are allowed to share spoilers here. Absolutely, absolutely, absolutely. Like So, मुझे for those यही of अच्छा you who लगता have है not कि watched the just film, discuss this with so spoilers. for those of you who have not watched the film, what is the film? The story is about a little girl who's come out of school. Her name is Meena, and she's probably in second or third grade, very young girl. And she comes out of school realizing that her mother has not come to pick her up as usual. And basically, thereafter, it's her journey trying to find her way back home. अब ये मतलब तो सेकंड में थर्ड में यानी कि 5-7 साल की जो बच्ची है, 7-8 साल की बच्ची है, she doesn't know the way home, she doesn't know the number of the bus she takes, she doesn't know the address, तो but she knows how the bus looks. So उस हिसाब से she kind of takes a guess and she gets into a bus. Unfortunately, she goes into a bus which is going in the wrong direction. बस सही है मगर डायरेक्शन गलत है. अब छोटी बच्ची को वो भी नहीं पता है. Now, initially in the film, what we observe while she sits in the bus is, again, from the child's perspective, there is a woman who's talking. There's a man and a woman who seem to be courting each other. मतलब ये सब जो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, आइडिया ये है कि ये सब चीजें घट रही हैं फिल्म में, एंड बच्ची ये सब देख रही है बस. तो अगेन हम साउंड्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं लोगों की कहानी. द वुमन इज स्कोल्डिंग, ऐसा कुछ था. देयर इज एन ओल्ड वुमन, आई रिमेंबर, शी इज टॉकिंग. ये सब चीजें होते 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 फाइनली शी गेट्स एग्जैस्परेटेड, समबडी हेल्प्स हर, कुछ होता है और एक बस में वो फाइनली जाके बैठ जाती है. दिस इज अराउंड आई थिंक 35, easily 35 or 40 minutes into the film. She's sitting there, and this is how cinema teaches audiences cinema, right? What happens is suddenly Meena, who's sitting there just looking bored and glum and upset, looks at the camera. And off camera, there's a sound that comes that says, Meena, don't look into the camera. And the next thing you know, Meena, this things, throws a fit. She says, no, I don't want to do this. I don't want to do this. Suddenly it turns into a BTS. The footage becomes grainy. यानी कि अब फिल्म से हम डॉक्यूमेंट्री में आ गए. हम पहले फिल्म बना रहे थे, अब डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं. अब वो डॉक्यूमेंट्री लाइव शूट हो रहा है, बीटीएस लाइव शूट हो रहा है. तुरंत वो बीटीएस में चला जाता है. वी सी द डायरेक्टर, वी सी द साउंड, बस इज स्टॉप्ड, द गर्ल रिफ्यूजेस, शी इज टेकन ऑफ, लाइक आई सेड, her clothes, her costume, and then she says ki I don't want to do this. And now the director is trying to convince her, people are trying to convince her ek ek karke. And the second half of the film is the same girl, Meena, who's now in her whatever real avatar, so to speak, refusing to act in the film, but finding her way home. So the film was about a girl who's trying to find her way home, and now it is a documentary about a girl who wants to find her way home. Because the AD or somebody says कि उसके ऊपर माइक अभी भी लगा हुआ है, तो उसको हम फॉलो करते रहते हैं, उसकी बातें सुनते रहेंगे. This is the genius of this film. कि मतलब sometimes if you think about it, अगर second half of the film को हम फिल्म ना माने और actually documentary माने, तो इसका जीनियस लेवल कुछ और ही है. कि क्या एक्चुअली ये हुआ था कि उस लड़की ने मना किया, क्या और क्या ये रिटर्न था, we'll never know. And that is the beauty of this film. The fact that this line between reality and fiction is blurred so brilliantly कि at one level कि of course ये भी नाटक है, ये भी acting है, but at the same time it's so real and it's unfolding in real time
in front of your eyes and sometimes not in front of your eyes, that you believe it. And that is the power of cinema. That when you get inside that theater, when you sit in front of that screen, when the lights go off, when it all begins, you and the director agree that यार मैं जो भी दिखाऊंगा ना अभी 1.5 घंटा, please believe it, believe this is happening. And even if I switch off the camera and change the angle and show myself and say, look, I'm making this film, you'll still believe it, right? You won't be like, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता. Yeah, I believe it. I want her to get home. I wish यार वो गलत गाड़ी में तो नहीं बैठ गई, कोई गलत आदमी तो नहीं मिल गया उसको, कैसे पहुंचेगी, उसको रास्ता नहीं पता. You're following her in the drama, and this is the genius of the mirror. I think मतलब जितनी भी बार मैं देखूं, it just yeah, absolute genius. एब्सोल्युटली. लाइक 16 ने सच बात बोली आपने एक्चुअली. और मैंने जब भी इस फिल्म के बारे में लाइक फिल्म मेकर्स ने लाइक आई थिंक जॉश एंड बैनी सैफडी जो जो अनकट जेम्स और गुड टाइम के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इस फिल्म के बारे में थोड़ी बात की थी. लाइक साउंड प्लेज अ वेरी एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन दिस फिल्म बिकॉज लाइक anytime we go she's off the camera, but sound we can hear everything about it. Like every foley thing is about is about her just walking down the lanes, the roads, and just getting finding a way over that. And हमें लगता है like आपने जब just mention किया, बड़ी ब्यूटीफुली मेंशन किया कि एक फ़िल्म जो थी वो अचानक से डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। तो डॉक्यूमेंट्री में ही उसमें वहाँ पे लोगों को पूछा जाता है कि लाइक तू कौन है? तो एक बंदा बोलता है कि नहीं मैं तो यार यहाँ पे अपटाउन जैसे क्या कहाँ पे रहता हूँ, और बोलता है मुझे तो आज इतने दिन का थोड़ा कुछ मिलने वाला था इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। सो कैसे उन्होंने ये सब कुछ स्टेज किया हो या ना हो मुझे कुछ पता नहीं, और मैं एक्चुअली मुझे आज तक उसका आंसर भी नहीं मिला है कि वो सभी चीज़ वो जो थी, वो एक्चुअली स्टेज थी या क्या थी? आई डोंट नो. मतलब वैसा है, और मुझे उसी बात में संतुष्टि भी मिलती है कि इट्स ओके. मैंने जैसा भी फ़िल्म देखा लाइक आई वॉच्ड इट एज़ अ फ़िल्म फर्स्ट एंड देन अ डॉक्यूमेंट्री. अ, आई वाज़ कंप्लीटली सैटिस्फाइड विद इट. लाइक आई वाज़ लाइक क्या क्या बता सकते हैं, और एक्चुअली वैसा हो गया था कि लाइक ओके, Hmm. I watched a perfect film, and it was Yeah, about children just being roaming and roaming and roaming वैसा था. yeah. So at the end actually just वो फिर वो पहुंच जाती है घर पे वैसे. Yeah, you were Hmm, saying something. hmm. And I think what you're saying is right in the sense कि when you watch the film you realize कि मतलब like for example आज के time में अगर ये film बनाएंगे तो we'll probably be tempted to use a drone shot to give a Hmm. cityscape, lanes ये वो वगैरह. um, but there is nothing quote unquote cinematic in terms of the shot taking or something. मतलब बहुत ज़्यादा extravagant कुछ हो रहा. I think opening shot कुछ एक किस्म का एक pan था if I remember correctly, या एक पता नहीं single take का कुछ था, but उसके अलावा otherwise it's a very straightforward film in its shot taking, and I can't remember there being much music that's used in the background. It's mostly just that ambient sound that we've been hearing from the credits. So I think it's a great sort of testament to if you know what you want to say, and if you know what you want people to feel, then it doesn't really then how you do it is secondary. मतलब you don't, and this is I think something a lot of filmmakers have said ना कि मतलब filmmaking is their film school वाला जो एक फंडा है कि मतलब when you go and do it yourself, that's when you realize. But I think a very very important aspect of it is to know um, what you want to say and how you want people to feel. I think उस clarity के साथ जब आप approach करते हैं एक subject को, तो फिर बाकी सारी technical चीजें secondary हो जाती हैं, Hmm. और like I mean I remember मैंने बहुत time पहले जब Taste of Cherry एक friend को दिखाई थी, he was not able to watch the film, he was not able to sit through the film because it really tests your patience in one way. मतलब you're used to films where something happens, but Hmm. how same thing be happening throughout. मतलब कुछ नया हो, कुछ बदले, कोई नया कैरेक्टर आए, कुछ कुछ ट्विस्ट आए, कुछ हो नहीं, बट नहीं नहीं जी, this is what we are giving you. And but at the same time, like I said, वो conviction in what you want to say
if you have that conviction, if you have that clarity, I think then everything else becomes secondary, especially how you do it. And I think Iranian cinema is a great testament of that. I know for a fact that a lot of Iranian filmmakers also work with non-actors. First, a lot of filmmakers have done work with non-actors. So um, वो सब चीजें, मतलब स्टोरी और आप क्या कहना चाहते हैं और उसका जो पॉलिटिक्स है, that becomes a primary thing. Everything else is subservient to that. Everything else, to the extent कि आप फिल्म के बीच में फिल्म को बंद कर सकते हैं, यू नो, वो भी नहीं फर्क पड़ेगा कि मैं सिनेमा देख रहा था, अब मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, पर मैं तब भी 40 मिनट देखूंगा, मुझे देखना है कहाँ जाएगी ये बच्ची, क्या होगा इस बच्ची के साथ, बिकॉज यू हुक्ड मी ऑन टू दैट स्टोरी. एंड एब्सोल्युटली. या बोल. नहीं, एक्चुअली मैं वही बोला कि आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखा कि जब भी ये इस फिल्म ने ही स्टार्टिंग में एज अ फिल्म दिखा के हमें ऐसा एंगेज कर दिया, ऐसा हुक कर दिया कि जब इस फिल्म ने अपना डॉक्यूमेंट्री वाला अवतार ले लिया था, तो तभी हमें ऐसा नहीं लगता यार ये मैं क्या डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ यार, ये क्या है, छोड़ इसको, ऐसा नहीं. हम इतने एंगेज्ड हो गए थे कि ओके चल अभी ये बच्ची जा तो रही है, ठीक है, अभी आगे क्या जाती है अभी देखना तो चाहिए ही. और ऐसा कि ये कहाँ पे पहुँची है, किन लोगों से और लोगों से मिलती है, और वो तो जानने की अभी क्यूरियोसिटी तो रहती है. सो लाइक in everything I just love about this film in particular, the way it shots, the way it shoots the streets of Iran. Like I think they only used those wide angle shots because they only had a bus just to like shoot. Like I think उन लोग के पास सिर्फ एक वैन जैसी थी जिसमें लाइक दे कुड शूट. सो दे ओनली हैड लाइक वेरी फ्यू इक्विपमेंट्स. सो जस्ट हाउ दे कुड दे शूट ऑन दिस बजट, एंड कैसा लोगों के साथ ऐसे लाइक एक्चुअल लाइवली शूट किया. इट वाज इम्प्रेसिव फॉर मी. जैसे किसी आई थिंक स्मॉल टाइम फिल्म मेकर्स जैसे करते हैं जो न्यूयॉर्क में जो शूट करते हैं ऑन ऑन बजट, आई थिंक नॉट ऑल्सो न्यूयॉर्क, और जैसे फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा जैसे बिल्डअप हुआ था, लाइक जॉन लुक गोडार्ड कैसे इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस जैसे शूट करते थे, वैसे ही जैसी इस फिल्म में फीलिंग आ रही थी मुझे. और दैट्स एक्चुअली द ब्यूटी अबाउट इट, कि वही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वैसा लगता है, एंड दैट्स एक्चुअली इट्स वेरी गुड अबाउट इट. या नहीं, आई थिंक वो एक जो सेल्फ रिफ्लेक्सिव नेचर है. आई रिमेम्बर कि मुझे मैंने जब अपनी पहली फर्स्ट डॉक्यू फिक्शन फिल्म बनाई थी मलयालम में, उस फिल्म में मैंने इसके ऐसे कुछ ही जो सेल्फ रिफ्लेक्सिव वाला जो एलिमेंट है ना, कि आप दिखाओ लोगों को कि आप फिल्म बना रहे हो, मतलब आप फिल्म बना रहे हो, प्रिटेंड मत करो कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और ये रियलिटी है. मैं दिखा, तो मैंने आई रिमेम्बर मैंने कुछ उसमें कुछ शॉट्स में ट्राइपॉड शॉट में रख दिया था, बिकॉज आई वांटेड टू से कि भाई ये फिल्म मेकिंग है, मतलब देयर इज अ फिल्म, देयर इज अ डिवाइस बीइंग यूज्ड, डोंट यू नो. सो वो जो एक चीज है ना, दैट इज आई थिंक व्हाट मेक्स, and this is something that what is the genre is mockumentary. It's called a mockumentary, where the second half of the film is actually not a documentary, it's a mockumentary, because it's pretending to be a documentary. It's still not a, obviously it's not a documentary, क्योंकि वो लड़की जो एक्टर थी वो अभी भी एक्टर ही है, हमें पता है ना कि वो एक्टर थी, राइट? तो इसका मतलब even though she has removed the hijab and so on, the fact of the matter is in the second half we know she's still the same girl. So it moves from fiction to mockumentary, right? But like I said, the power of cinema is such that you still stay hooked. In fact, I was thinking कि ये फिल्म लिखते वक्त इसका अगर one line, मतलब if the one line of the film is कि a girl is trying to find her way home and a film crew films her, like, you know what, where is the excitement in that? But it makes for an hour and a half or whatever long film, and it's a great, and it's an engaging film. It's a really engaging film, and we're not even getting into the like I said, the political messaging and the political things that the film says. And Jafar Panahi is a filmmaker who's known for that. He was in fact under house arrest for many years, and his later films, if you watch Offside, I would highly recommend. I think it's on Hotstar. It's available on Hotstar. It's a fantastic film.
it's a again वो जो एक realism है उस film का of a group of girls. Iran में football girls are not allowed to watch football, so it's a group of Okay. girls who are going to go and watch a football match, and they have to dress up as boys to do it, and there is an entire different match that's going on outside of the match. There's an entire Oh. different game that's at play outside of that match. So I think the way he uses very, very simple stories or simple storylines, so to speak, and then play and how he plays them out. How he plays them out in a very organic, seemingly organic manner. मतलब obviously ये सब constructed है. ऐसा नहीं कि वो लड़की किसी भी गाड़ी में बैठ के कहीं भी जा रही थी. उसको पता था कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी में नेक्स्ट बैठना है, कहाँ बैठना है, बट देख के कभी भी नहीं लगता. you know. Um, and Jafar Panahi also made a film called Taxi, which is I think also available on Hotstar or one of the platforms, where he pretends to be a taxi driver, and all these customers that come and sit at the back seat or with him in the front seat, one of them recognizes him. You're Jafar Panahi, and मतलब उस तरह के conversations होते हैं. Again, the whole thing is कि क्या reality क्या fiction, फिर उसके बीच में कुछ accident होता है, something like that happens. So you are constantly made to question what you're watching, which I think in today's world is such an important message in itself. कि कितना आसान होता है एक सेटअप क्रिएट करके आपको ये विश्वास दिलाने में कि ये सेटअप नहीं है, ये तो रियल है, राइट? उस लड़की ने एक्चुअली बोला था कि नहीं अब मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी, फिर हमने उसको फॉलो किया, बट एक्चुअली तो ये पूरा सेटअप था ना, कहानी ये थी, उसको बोला गया था कि इस पॉइंट पे लुक एट द कैमरा. मगर सिनेमा ये एक विजुअल मीडियम ऐसी चीज है, एंड आज के जमाने में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू गिव टू पीपल कि भाई इतनी इजीली आप बेवकूफ बन सकते हैं. आपको लग रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, बट एक्चुअली आप मॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं. So I think there's a lot of takeaways from this film, and which is why I said, it's beyond just being a children's film. It's a children's film in the way that we observe the conversations. It's from that child's point of view. I think there's a lot of low angle kind of shots also, if I'm not mistaken. Yeah, मतलब at least eye level, बच्ची के eye level के shots भी हैं काफी शुरू में, if I remember correctly. जिसमें कि आप पूरी तरह से लोगों को देखते नहीं, because आप बच्ची के perspective से देख रहे हैं. But I think overall there is a lot of value as for an audience to watch a film like The Mirror and learn about films and the process. एक्चुअली एक लास्ट क्वेश्चन था मेरे तरफ से, और फिर लाइक आई एम लाइक एक्चुअली क्वेश्चन है और जस्ट कमेंट्स में वो भी एक लेना है. मुझे यही था कि आपने जब भी टैक्सी और भी एक दो फिल्म्स के बारे में बात की, जाफर पनाही की ही, आपको क्या लगता है कि वही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जैसा माइंडसेट और जैसा फिल्म मेकिंग था पहले की, लाइक अभी अभी ही काइंड ऑफ जैसा शुरू है, लाइक आई थिंक हाउ वाज द ट्रांजिशन, लाइक कैसे वो और भी ज्यादा पॉलिटिकल होना जैसे ऐसा हुआ है जाफर पनाही ओवर द इयर्स टिल नाउ? I'm not an expert to be able to comment on this, but my general answer would be yes, because अब तो और ज्यादा political होना जरूरी है ना. It's important to be more political now, because you can't just make films that don't have any political significance, because you're really doing disservice to the craft that you have, and not to say it's important to make films with a message or anything, but the idea is कि I think and especially उनको house arrest पे डाल दिया था. So during house arrest he made a film called This Is Not a Film, which he shot on his phone, right? And he, if I'm not mistaken, he smuggled it out of the country in a cake or something like that. ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है. So the fact of the matter is the circumstances are such that they probably drive him to become more and more political, because they're really pushing down and pushing back and asking and curtailing the things that he can say ना. मतलब क्या चीज कह सकते हैं आप, क्या नहीं कह सकते, तो उसको सबवर्ट करने के नए नए तरीके ढूंढना और भी ज्यादा. लाइक आई सेड, इन्होंने पूरी फिल्म आईफोन पे या किसी फोन पे, आईफोन पे ही बनाई थी शायद, और उस फिल्म का नाम भी रखा दिस इज नॉट अ फिल्म. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस थिंग ऑन सेंसरशिप ना. ठीक है, आपने बोला ना फिल्म नहीं बनाना, ये फिल्म नहीं है, दिस इज नॉट अ फिल्म. Okay, so
So definitely, I think circumstances are such that they probably definitely pushed him to become more political. Yeah. So there's a question from the audience. Remya Sasidharan ji like bol rahe, Iranian Hmm. films have been shaped by their social reality. What artists have to make to do with the resources they have? What is the relationship between art and the resources that an artist has? So, yeah, this is very true. Actually, the thing is, what I said earlier about um, uh, having cinematic or not being too cinematic, or as drone shots की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी when I was talking about all of that, a certain flair in your filmmaking, वो that's directly connected to resources. The resources money, budgets, the kind of cameras you use, the kind of access you have, the kind of permissions you get. कहाँ शूट कर सकते हो, कहाँ नहीं शूट कर सकते हो, कैसे शूट, क्या दिखा सकते हो, क्या नहीं दिखा सकते हो. So I think the relation. I think there is a very very direct relationship between art and the resources that are available. But what happens, I think, as an artist is um, when you don't have resources, you find other avenues, you find other alternatives, ways to work around. For example, what I said about Jafar Panahi under house arrest making a film on his mobile phone, right? Well, it's not that he didn't want to shoot a film on a camera, but because he was not allowed to make films and he didn't have access to those devices, he used an alternate device, and what that does actually in a larger this thing is it encourages more and more people and tells them and enables them कि ठीक है, अगर आपको कुछ जरूरी चीज कहना है तो नहीं, जरूरत नहीं है आपको कैमरा लाइट साउंड, इतने सारे साउंड इंजीनियर्स हैं, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है. आप फोन लो, घर के अंदर शूट करो, घर के अंदर एक लाइन बना. इफ यू वॉच द फिल्म, दिस इज नॉट अ फिल्म, you'll see like he constructs a little thing within his house and says this is the set, Hmm. बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, पावर इतना ज्यादा है इस मीडियम का कि पीपल विल बिलीव इट, पीपल विल बाय इनटू इट अगर आप कन्विक्शन के साथ कह रहे हो और क्लैरिटी के साथ कह रहे हो. वो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं इसमें वो मजा नहीं आया बिकॉज उसमें जिप शॉट नहीं था, या एक्स वाई जेड वो नहीं यूज किया. नो, इट डजेंट मैटर. ये सब चीजें बाद में आई हैं. सिनेमा शुरू कहाँ से हुआ है? सिनेमा तो यहाँ से शुरू हुआ था ना, कि कैमरा रख दिया, ट्रेन आई और बोला कि ये सिनेमा है, ये फिल्म है. Right, train coming onto the station, Lumiere brothers, this is a film. So if you look at the basis, और उस टाइम पे उसी को लोग नहीं बिलीव कर पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है. People were running away from the screen when the train came on, right? So the point is कि the power of the medium is such that people will believe, and eventually the resources you use have to be true to the story. कुछ कहानियां हैं जो मोबाइल फोन्स पे नहीं बन सकती, right? बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसको मैं मोबाइल फोन पे कैसे करूं, है ना. ये नहीं हो सकता कि नहीं, जब तक मेरे पास कैमरा और लाइटमैन और ये साउंड और फला और लाइन प्रोड्यूसर और ये लोग नहीं होंगे तब तक मैं फिल्म नहीं बना सकता. नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू हैव टू फाइंड वेज टू वर्क अराउंड इट, है ना. सो आई थिंक दैट्स अ yeah, that's something that's something that I think artists are always grappling with, है ना. They are kind of always working around there, and this is what leads to innovation also, I feel. You're able to think of new ways to um, tell, and फिल्म के अंदर भी बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं ना जो आपको चीट करने देते हैं, जिसको यूज करके आप चीट कर सकते हैं. तो फिर आप अपना क्राफ्ट जैसे जैसे होन करेंगे, यू विल बी एबल टू. अगर आपके पास वो रिसोर्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मडप्पली यूनाइटेड में एक शॉट में शी इज सपोज टू फ्लिंग अ बैट एंड वो बैट गिर जाता है. अब हमारे पास एक ही बैट था और वो कंटिन्यूटी का बैट था, पूरे 22 दिन वो बैट यूज करना है. तो अगर एक बार उसको हवा में उड़ा दिया और वो गिर गया तो वो बैट टूट गया या कुछ हो गया उस पर, फिर वो कभी क्लोजअप नहीं यूज हो सकता उसका. सो व्हाट डिड वी डू, वी शॉट इट इन सच अ वे दैट शी फ्लिंग्स इट एंड द नेक्स्ट शॉट इज अ बैट ऑन द फ्लोर एंड वी यूज साउंड टू गिव यू द इंप्रेशन कि बैट अभी गिरा है, पर बैट गिरा नहीं था, बैट वहां पड़ा हुआ था. तो ये सब चीजें कैसे हम सीखते हैं, क्यों हम सीखते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, दूसरे बैट का बजट नहीं, फॉर एग्जाम्पल, यू नो.
So I think, yeah, Absolutely. ये, That gives rise to mumblecore cinema as well. Like अपने जैसे American independent mumblecore mm, films जैसे like it is a very good example how to just create from the resources you just have, not to just कि कुछ मुझे चाहिए मतलब स्टार वॉर्स जैसा कुछ बनाना है तो मतलब बनाना है उसके बिना तो कुछ होगा नहीं mm. वैसे so like it's just a great example. और एक question आया है actually audience से, enjoyed the talk, gave a lot of insights on the Iranian movies and their makings, a couple of which we have also enjoyed. This will inspire us to make watch much more movies actually. So not a Right. question but yeah, just a Yes. suggestion, an I observation would, obviously. yeah, highly recommend movies. And now there are so many of these are available. Offside is available. So I'm just sharing for the benefit of whoever's watching some more movies that one can go and find. Offside is one which is on Hotstar. Taxi is another one. A great film. Where is the Friend's Home is a must watch. It's on Mubi, I think. It's a movie, Uh, yeah. it's a movie. And Crimson Gold is another Jafar Panahi movie that I remember. Baran is another film. Lots and lots of them, and each film different from the other. मतलब ऐसा नहीं कि सारी films इसी तरह से fourth wall break करके कुछ कर रही है, but they're all such great films. Yeah. But Ajay, I think you should watch Jafar Panahi's like his son's film. Actually, that film actually released in 2022 itself. It's called Hit the Road, and it's by Okay. Jafar Panahi's son, called Achha. Panar Panahi. So Okay. yeah, he actually made a film. Okay. I'll Even I'll I think definitely check that out. I did not know the about this. Circle, The like Circle. The Circle is another absolutely, film that is recommendable. Yeah, The Circle is also an older film, is it? I think so. yeah, Circle, yeah. Yeah, Abhinandan, he's my like he's my friend actually. He just is just asking you what is the first Iranian film he Abhinandan, remembers most. hi. The first film that I definitely have memory of watching is either Children of Heaven or Taste of Cherry. I have a feeling it was Children of Heaven first, um, and Children of Heaven is a 1997 film. So yeah, I think it was Children of Heaven first, and then Taste of Cherry. That's the one that I remember. And Oh wow. but the one that I really remember impacting me and and the kind of filmmaking I wanted to do was Taste of Cherry for sure. Yeah, but I Oh still wow. haven't done anything like it. So yeah, बट स्टिल क्या मतलब ईरानियन सिनेमा लाइक आपकी इस कॉन्वर्सेशन से ही पता चला कि हाउ ग्रेटली इट्स इंस्पायर्ड यू, इम्पैक्टेड यू, लाइक बहुत कुछ आपके लाइफ में लाइक ईरानियन सिनेमा की वजह से आई थिंक हुआ है। वैसे लाइक आपके कॉन्वर्सेशन से ही पता चल लग रहा है, और आई थिंक yeah. मडपल्ली यूनाइटेड से ही पता चलता है कि लाइक हाउ ईरानियन सिनेमा हैज इंस्पायर्ड I'm यू। trying to find the name of that film. The day Buddha fell out of shame, या ऐसे कुछ नाम है, which is again another Buddha. The day Buddha collapsed out of shame. Yeah, it's a 2007 film. Again, just if I remember correctly, this is a children's film also. It's made by Hannah Makmalbaf, who's the daughter of Mohsen Makmalbaf. And it's a film where a group of kids, a group of children, are pretending to be terrorists and stopping a young girl from going to school. And they all have like fake guns in their hand, and they're like threatening her to not go to school and not study. And it's just again, ये synopsis एक line से ही पता चल जाता है ना. It's just such a powerful film, such a powerful film. And The Day I Became a Woman is another very, very powerful film. One of my favorites in the way that the mirror is a film called Salam Cinema, which is Makmal Baf again, Mohsen Makmal Baf. I think You that was the just other film recommended that me. है ना? I had just when you reached out and I said कि दो तीन films हैं उनमें से एक I think Salam Cinema था. Again, मतलब the power of filmmaking, because एक पूरी film is about auditioning for a film, right? And just literally hundreds of people coming to audition for a film, and it is so engaging. It is so dramatic. It shows you how films manipulate. It shows you how films cheat. It shows you how films show the truth. It does everything, you know, and it's a piece of genius. So again, another film that I would definitely recommend. Yeah.
हम्म. So yeah, Abhinandan और एक सवाल पूछता है, so like if you have some suggestion for Iranian filmography to follow. I think watch any and all of Majid Majidi, Mohsen Makmalbaf, Jafar Panahi, um, of course Abbas Kiarostami. I think these four filmmakers, if you can catch hold of any of their films or one film if each, that would be a great way to start. And then Also, deep dive. Yeah, yeah, also I would also recommend one other filmmaker, which is Ashghar Farhadi. I right, just love his film. Obviously, just modern dramas, kaise dikana hai, right, just doing that right. I think he has cracked the code of it. right, right. Asghar So Farhadi's just The Salesman is also a really, yeah, powerful film. Yeah. absolutely, just last question, just before we end it. Children of Heaven, like उन्होंने बोला कि Yes, The the Children of Heaven one is about. about the small girl whose shoe gets lost. And yeah, that's the film. Yes, that's right. Oh, yeah, थैंक यू सो मच फाइनली अजय, लाइक बहुत 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 धन्यवाद आपका इस शो पे, इस पॉडकास्ट पे, वीडियो पॉडकास्ट पे आने के लिए। जस्ट बहुत मतलब मज़ा आया आपसे बात करने में, लाइक ईरानियन सिनेमा इन जनरल, जाफ़र पनाही के फ़िल्मोग्राफ़ी इन जनरल, और जाफ़र पनाही की इस छोटी-सी फ़िल्म द मिरर के बारे में बात करने के लिए बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच फाइनली फॉर हैविंग मी, लाइक हैविंग कमिंग हियर। एंड हम लाइक आई थिंक बहुत महीनों से ये प्लान कर रहे थे, लाइक एंड No, यू टोल्ड मी दैट वी शुड डू दिस पॉडकास्ट ऑन चिल्ड्रंस डे इटसेल्फ, Children's सो Day. लाइक Yes. Yeah. एब्सोल्युटली। Thank you. तो Thank you so थैंक यू। much. Thank you. Thank you. होपफुली Look forward to doing this. Yes. एब्सोल्युटली, होपफुली, लेट्स सी, जब ये आगे जाके मडपल्ली यूनाइटेड का डिजिटल प्रीमियर होता है, सो वी विल लाइक डू समथिंग समथिंग मोर अबाउट, लाइक कुछ और फिल्म, Yes. कोई और फिल्म के बारे में भी कुछ करते हैं। Sure. Sure. होपफुली कभी, लाइक आपके ऊपर है, आप कभी रिलीज करते हैं, लाइक हम तो हाजिर है वो फिल्म ओटीटी पे देखने के लिए। Thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच सर, एंड गुड नाइट सर। Good night. Thank you. Bye bye.